precise strikes of the hammer and chisel echo in the air as skilled hands carve intricate patterns into the wood. Every stroke is deliberate, bringing into shape the divine chariot that carries the gods during the Rath Yatra in Puri, Odisha. Sharp saws glide smoothly through thick wooden logs, shaping the raw material into the framework that will support the sacred structure. In the coastal town, the Rath Khala, located just outside the Jagannath temple, comes alive every summer as the chariot making process begins on Akshaya Tritiya. Over 75 skilled artisans along with temple servitors are entrusted with the responsibility of crafting the three majestic chariots, one each for Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra. अभी पहले चरण काम में हमारा जो रथ का 42 पहिए हैं उसका तैयार हो रहा है। अभी हर एक रथ का 4-4 पहिया कंप्लीट हो गया है, क्योंकि भौरी तिथि को एक अख और 2 पहिए संजोग किया जाएगा। उसी दिन से रथ का जो फिटिंग का कार्य शुरू होगा। तो उसी दौरान हमारे जो गुज और जलयंत्र कुड़का ये वगैरह काम भी इधर हो रहा है। अभी पहले चरण काम में 2 पहिए और 1 अख ज़रूरत है, उसका अख भी आकर लगाया हुआ है, उसका कार्य चल रहा है। The three majestic chariots are crafted from scratch in just 58 days, following strict religious guidelines and without the use of iron nails, preserving a sacred tradition passed down through generations. No materials are reused. Everything that goes into the making of the chariots each year is freshly sourced. हम जो आया था इन काम करने के लिए बचपन से, हम जो 5 साल हुआ था तो हम पिताजी से आया था यहाँ काम करने के लिए। ये हमारा सेवा है, उपकार सेवा है, इसलिए हम 5 साल से हमारे सब बच्चा आ गया काम करने के लिए। As the chariots begin to take shape, the artisans carefully assemble each part, ensuring perfect alignment and the strength required for the journey. The Jagannath Rath Yatra is scheduled to commence on June 27th this year. It marks the annual journey of Lord Jagannath along with his siblings Balbhadra and Subhadra from the Jagannath temple to the Gundicha temple, often referred to as their aunt's temple.